Hello and welcome. You're watching Money9 and this is Ganesh Chaturthi special. लंबोदर पीतांबर विघ्नहर्ता अष्टविनायक श्री गणेश का आगमन हो चुका है और मंगल मूर्ति गणेशा इज द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड विजडम इज ऑलवेज वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स. तो जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तो हम गणेश जी को याद करते हैं. तो क्यों ना आपकी इन्वेस्टमेंट्स का या निवेश का भी जब शुभारंभ हो तो आज ही से क्यों ना हो. तो कैसे आपको अपने निवेश का श्री गणेश करना है ये बताने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं. आई एम जॉइंड बाय astute स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड मार्केट वेटरन संजीव भसीन, डायरेक्टर एट IIFL सिक्योरिटीज, और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास गणेश चतुर्थी स्पेशल एडिशन मार्केट मास्टर क्लास पे. Thank you very much, Sanjeev sir, for joining us and happy Ganesh Chaturthi to you. Yeah, same to you, Sakshi, and to all your viewers. A very, very happy, prosperous, and healthy Ganesh Chaturthi. And we hope much needed relief on the health front. He's been very kind on the financial front, and let's hope it continues. Absolutely, sir. Let's kickstart by that so far markets have had the blessings of Lord Ganesh. We've seen a stupendous rally, record highs पर markets हैं और साथ ही ये गणेश चतुर्थी का शुभ मौका भी है. तो ऐसे में जो नए निवेशक सोच रहे हैं कि बाजार में अब एंट्री ले लेते हैं, तो क्या निवेश की शुरुआत इस शुभ मौके पर होनी चाहिए? So you recall a couple of months back when there was a lot of pessimism, gloom, doom. I told you we are headed to 60,000 by end of the year. And now we've done it much faster than that. I mean, who thought 58,000 will be crossed with the applaud? So markets are all about greed and fear, wall of liquidity, India handling the second wave well, our vaccination drive and global liquidity are all putting India in a very, very sweet spot. However, Sakshi, a large part of the rally is already played out. You have to be cautious on corrections. But for the new investor, there can't be a better asset class. You know, if you took all the four asset classes, that is gold and silver in bullion, fixed income, real estate and equity I think is going to outperform for the next 2-3 years. So if we took with a pinch of salt that the near term we've run up quite a bit, there can be a correction, but you have to own stocks. So get into good stocks, good mutual fund, do a SIP, because the way ahead for India in the next 2-3 years is very, very bright. Absolutely, sir. And this is what I was coming to, that all those investors who have still not, entered the markets, they have, missed the large part of the chunk that we have seen of the rally. For them, what is the best way to, enter into the market so that, they can actually get into this profitable trade going forward from here? So, Sakshi, either do a good mutual fund SIP, pick up some sectoral themes. We think financials, banks, infrastructure are doing well. Get in touch with your brokerage. IIFL Securities does this full time. We are one of the best known people for forming portfolios. Look for your RMS or your PMS, depending on your profile, depending on your the amount of money you want to put. But please get some advice and start. Don't wait for the next day, because markets are all about entering. Once you own stock, then over a period of time, wealth will come by itself. Absolutely. Now, this is Ganesh Chaturthi, and it's a perfect opportunity to also look at our beloved God and also learn some valuable lessons about investing. For you personally, I wanted to understand from Lord Ganesh, what are the things that you've picked up as an inspiration on investment, money lessons that all our viewers can also imbibe into their lives? So Ganeshji's biggest asset is he keeps his ears to the ground and he hears the noise. He knows where is going what. So if you kept wondering what was the theme in the last 1.5 years, you missed out on IT and mid-cap ITs, because they were telling you that where the money lies. Similar is the case with metal. So Ganeshji keeps a very close eye on the ground level. What are the changes going on in society in general? And that's where his astuteness, cleverness comes. Also, he tells you that if you are little patient, step by step, wealth is created. Wealth is not created overnight. So keep your levels, keep accumulating slowly and steadily, and the long way ahead. These are the two big virtues, keeping your ground on the lead and accumulating for longer period, because he's the lord of both those, virtues.
एब्सोल्युटली. सो फॉर ऑल दोज इन्वेस्टर्स जिनको ये लग रहा है कि अब तो बाजार में बहुत ज्यादा रैली हो चुकी है, अब पता नहीं आगे बाजार अच्छा चलेंगे या नहीं चलेंगे, आपने जैसे बताया कि सबने सरप्राइज जरूर हुए हैं इस तरीके की चौंकाने वाली रैली देखते हुए. 58,000 has been crossed in a jiffy. 60,000 we are at, almost 18,000 we are headed to on the Nifty. If I had to ask you some targets that you have in mind for say 2 months now down the line, we have Diwali coming up, then we have the year end or the financial year end as well. Any targets that you can you have set in your mind that you could share with all our viewers? So you put me on the line last time also, and I told you 17 and a half is coming by Diwali. So we've had an early Diwali, no claim about it. All I can tell you is, Sakshi, that I am slightly cautious now on the market. I think a large part of the rally is played out. There is a lot of froth building globally also, so be cautious. We can see a fast and furious correction in the second half of September. But I think by the year end, we are going to close closer to 18,000, maybe 17,700, 18,000. So I would say still 300-400 points, but be prepared for a 1,500 point correction on the downside. Okay. And at this point in time, we've always been seeing that there is a shift towards defensives. Would you say that this is the time to shift out of the high beta stocks, go towards defensives? What should be the strategy for either of these places for all the investors invested here? We are getting overweight on financials. We are reducing our bets on metals and IT. We think the best has played out. The rupee is showing a lot of strength, and that's a global phenomena. The dollar is weakening, plus the rupee showing extreme strength given our macros, given our finances. And I think banks are in a very sweet spot. Banks have underperformed, but the provisioning for the second wave of COVID was much more than anticipated. It has not turned out to be that way. I think the banks will come out very, very strong as capex expenditure and new credit flows come in. So we are more overweight on banks, on infrastructure, on local India plays rather than global commodities or IT. Right. And what about the broader markets? We have seen that the mid and small cap are somehow on the back foot right now, after the kind of rally that we have seen. What next for these two sectors? Yeah, rightly. So, you pointed out a good, observation that it has been all about large caps, but that's the way the cookie crumbles. People have allocated more money there. We think there is the disparity or the price valuation is giving you comfort. So if you are in good mid caps, particularly banks, financials, infra, realty, then you are getting a very good opportunity, because we think mid caps from this quarter onwards will start to outperform. And if you may say so, I could suggest 2-3 names which I think can be relative outperformers from here till the end of the year. एब्सोल्युटली सर. विघ्नहर्ता शेयर्स तो पूछने ही है, क्योंकि ऐसे मौके पर सभी लोग यही ढूंढते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में गणेश जी का आशीर्वाद हो जाए और चार चांद लग जाए. तो आपके हिसाब से इस मौके पर अगर किसी को निवेश करना हो तो वो विघ्नहर्ता शेयर कौन से होंगे? तो देखिए साक्षी जी, एक पहला शेयर है IRB इंफ्रा. 15 साल से लार्जेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन प्ले है, जो टोल टैक्स पे कलेक्शन है और EPC का वर्क है. और they had to remodel a lot of ifs and buts because of political interference, state government. Now it's streamlined. आपको पता है कि आपको अगर बॉम्बे से बाहर जाना है तो फास्ट टैग इज अ कंपल्शन. You are not getting visas for UK and US, so you're saying मैं लोनावाला या पुणे जाऊं. अगर आप महाराष्ट्र में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो शिमला और मसूरी के लिए रास्ते चौक ब्लॉक हैं. तो we think IRB is a very good play on the rise in traffic, better roads, government's new national monetization program. The stock has got a market cap of 6,000 at 170. We think this is going to double in the next 1 year and maybe more. So that is our top pick on the playing on the pan India infrastructure. Second bet would be Bandhan Bank, the largest microfinance player, जहाँ पे 2.5 करोड़ अकाउंट है, adding 10 lakh per month. और जो delinquency थी वो because of Assam, West Bengal has played out. Now we think the recovery will be very fast and credit is expanding extremely well. Plus they've changed their model into uncollateralized to collateralized, which will pay rich dividends in the coming quarter. The risk reward is very favorable for a target of 400 in the next 1 year. And third is RBL Bank. Again, one which is delving into the fintech very fast as far as credit cards and other credit businesses go. And the valuations at 0.75 time price to book is giving me a lot of comfort on the price performance. I still think 350 is coming by next year. These would be 3 of my Vighnaharta shares. As a disclosure, we have clients who are having these in their portfolio and we are building on them.
चलिए, तो विघ्नहर्ता शेयर्स भी आपके पोर्टफोलियो में आप शामिल हो जाएंगे, तो फिर चिंता किस बात की है। बाजार में भी अच्छा मूव है। नियर टर्म में अगर थोड़े बहुत उठापटक हुई भी तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगले 2 से 3 साल में संजीव जी ये बोल रहे हैं कि अभी भी इक्विटीज एज एन एसेट क्लास आपको आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जो आपने स्टॉक्स बताए ज्यादातर मिड कैप स्पेस से थे, आपने बताया भी कि मिड कैप्स में आपका बुलिश मोमेंटम अब जारी होना शुरू हो जाएगा, तो यहीं पर रहना बेटर रहेगा। अभी जैसे ही फेस्टिव स्पिरिट्स तो शुरू हो ही चुकी हैं, आगे आते हुए दिवाली भी आएगी, लेकिन इस फेस्टिव स्पिरिट को देखते हुए कुछ ऐसी कंजम्पशन थीम या ऑटो स्पेस, इन सभी पर आपका किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं? क्या यहाँ पर अभी जो दिक्कतें आ रही हैं ऑटो स्पेस को देखते हुए, क्या ये सुलझती हुई नजर आएंगी? इस स्पेस पर आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे इन्वेस्टर्स को? हाँ, ये भी बहुत अच्छा आपने पॉइंट लिया कि ऑटो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट ये ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन है। आपको पता है सेमीकंडक्टर मार्केट में बहुत शॉर्टेज है और डिमांड फ्लो इतना स्ट्रांग है कि 3 महीने की गाड़ी की वेटिंग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेमीकंडक्टर्स आएंगे ही नहीं, वो आज नहीं तो मंथ एंड तक या उसके बाद आ जाएंगे। ताइवान में इश्यूज थे, मलेशिया में, दे आर गेटिंग सॉर्टेड साक्षी, एंड लाइक यू सेड, दिस इज द बेस्ट कॉन्ट्रेरियन सेक्टर टू बाय बिकॉज personal transport is going to increase manifold as rates are low, interest rates, and people want to own vehicles because of COVID experiences. तो यहाँ 3 शेयर मैं रेकमेंड करूंगा जो मुझे लगता है दिग्गज हैं। सबसे पहला Bosch is just invested $1.5 billion in a semiconductor unit in Dresden. They are saying by October it will be back to production. Bosch is the complete OEM for autos. They can't be a bigger play. वो लेने की चेष्टा कीजिए। साथ में मारुति, जहां हम देख रहे हैं प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज टू कॉम्बैट द इनपुट कॉस्ट, और डिमांड सप्लाई विल बी अ मैटर ऑफ मिसमैच फॉर द नेक्स्ट 1 month, बट आफ्टर दैट आई थिंक मारुति इज गोइंग टू फ्लाई। एंड थर्ड वुड बी आइशर मोटर. I think that is again poised to do extremely well, given that their two commercial vehicle, their MCV, and the Royal Enfield is seeing a lot of excitement. These 3 I think would be outperformers, but you have to go through the pain of maybe end of September. आपने प्राइस हाइक्स की ऑटो स्पेस में बात करी। मारुति सुजुकी के लगातार 4-5 बार यहाँ पर प्राइस हाइक्स होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा हमने देखा एफएमसीजी स्पेस में भी कई कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा रही हैं। HUL ने हाल ही में कई चीजों के प्राइसेस बढ़ाए हैं और अभी हाल में 40,000 का लेवल निफ्टी एफएमसीजी ने भी क्रॉस किया फॉर द फर्स्ट टाइम। कई दिग्गज स्टॉक्स ने यहाँ पर परफॉर्म किया। कंजम्पशन स्पेस को किस तरीके से देख रहे हैं आप? तो वो तो एक नो ब्रेनर था इन द सेंस के ये बिग इज गेटिंग बिगर, और आपको पता है घर बैठ के कंजम्पशन हैज बिकम अ थीम ऑनलाइन एंड सो ऑन, और साथ में बिकॉज ऑफ पाम ऑयल प्राइसेस एंड अदर इनपुट कॉस्ट, लीवर एंड द लाइक्स हैव हैड टू रेज प्राइसेस। यहाँ पे मेरा टॉप पिक मैं 850 रुपए से गोदरेज कंज्यूमर बड़ी जोर से कह रहा हूँ। अभी भी मैं सोचता हूँ गोदरेज कंज्यूमर इज अ वेरी वेरी गुड स्टॉक. पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड. They've changed their leaders have changed, and I would strongly recommend ITC जो एक नॉन परफॉर्मर रहा है, बट ITC का FMCG बिजनेस बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। और साक्षी जी, मेरे को कोई अचंबा नहीं होएगा कि इस ईयर एंड तक ITC आपको 250 रुपए या उससे बियॉन्ड भी आपको भाव दिखा दे। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड गोदरेज कंज्यूमर एंड ITC in this sector and as stocks. आईटीसी के निवेशक बहुत ज्यादा खुश होंगे आपकी इस रिकमेंडेशन पर। ऐसे मंगलमय मौके पर आपने आईटीसी के लिए वकालत कर दी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब हमें देखने को मिल सकता है काफी अरसे के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब आईटीसी में भी तेजी देखने को मिले, और ऐसे ही कुछ विघ्नहर्ता शेयर्स में आप निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को डेफिनेटली प्रूव कर सकते हैं, सभी विघ्नों से प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ इस खास मौके पर जुड़ने के लिए, हमारी सभी व्यूअर्स के साथ इनसाइट्स शेयर करने के लिए मार्केट्स पर। उम्मीद करते हैं कि ये गणेश चतुर्थी का जो मौका है सभी के लिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, मार्केट्स के लिए और सबकी हेल्थ वाइज भी बहुत ही बेहतर साबित हो आगे आने वाला साल भी, और हम जल्द से जल्द इस कोविड जैसी दुविधा से दूर हो पाए और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज को डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही कुछ खास चर्चा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए मनी 9 पर, क्योंकि मार्केट्स और पर्सनल फाइनेंस को लेकर एक्सपर्ट्स आपको राय देते रहेंगे और गणेश चतुर्थी के मौके पर कुछ खास एडवाइस आपको मनी 9 पर जरूर मिलेगी।